Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le sujet de ce soir, vivez tel un gérant et le signal Avyakt pour que chaque pensée élevée soit utile et que vous soyez complet. Vivez comme un gérant. Être un gérant signifie être un ange léger et lumineux. Une pensée élevée de l'enfant et l'enfant reçoit du Père le fruit de 1000 pensées élevées. L'enfant reçoit 1000 fois pour une. Écoutons maintenant Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. सभी ने खजानों की लिस्ट तो बनाई होगी। कितने Vous avez भंडारे tous खजाने dressé votre liste. और उनमें Combien से de सब trésors avons-nous chacun et comment les utilisons-nous de façon यूज utile? करना एक होता है, दूसरा समय पर उसको सफल करना। Une chose, c'est d'utiliser le trésor et l'autre, c'est de pouvoir क्योंकि बाबा का l'utiliser quand on कार्य en a besoin au bon moment. या चल रहा है, Et dans la tâche de Baba, तो जब dans शुरू toute होता है tâche de Baba, qu'elle soit commencée ou qu'elle continue, और जो कार्य चल रहा होता on है devient तो tous भी au बहुत début सक्सेस होता है। coopératifs et qui, तो जो हर une प्रकार tâche से qui se हर continue, on समय doit सहयोगी être होता है complètement coopératif. उसको Celui कभी qui est कभी जरूरत पड़ती coopératif है, परंतु उसका à खजाना tous les moments et pour संपूर्णता भरपूर रहता है, à tous les moments, il y a un खुशी support रहती है, dans la हल्कापन रहता है, méditation, mais les अपनापन trésors रहता है, demeureront complets. Il y aura de la légèreté, il y aura de अपने l'appartenance जो et de la भी हो, lumière. कोई भी कार्य होगा, बाबा का कार्य है, हमारे माता पिता Par का, ceux परिवार का, qui appartiennent, तो उनके साथ ils चलना sauront que ce खुश sont रहते les हैं। parents, nos parents et que सारे c'est la जैसे tâche de nos parents. अगर Et अपने à ce आप को moment-là, संपन्न les करना है pensées seront तो सफलता होगी। élevées. Et dès la première journée, si on sait qu'on utilise les trésors à बाबा bon escient, बच्चों को utilisons-les à bon ट्रस्टी escient, बनाते d'une façon utile. Aujourd'hui, Baba dit, vivez comme un ट्रस्टी में gérant. भी कई स्टेजेस होती है ना, Il y a différents niveaux सब pour कुछ le बाबा का gérant. है, बाबा के ही कार्य के लिए है, Tout appartient à Baba et c'est seulement pour la लेकिन अगर tâche मैं de थोड़ी Baba. सी कि मेरा है, Mais मेरा intérieurement, है, même s'il y a une toute petite, समझ une लेना trace de pensée que c'est à moi, बाबा का है je dois, और en tant que सबका है। gérant, utiliser बड़ा सुख le होता है trésor कि अब एक utilement. जीवन है और Utiliser पूरे ट्रस्टी le हैं, trésor तो à ट्रस्टी bon से escient. जो उसका रिटर्न Je मिलेगा dois वह être 10 गुना। un gérant, complètement un gérant. Et तो si बाबा je कह suis un रहे थे gérant, je vais recevoir des अपने milliers de fois. हर Je vais श्रेष्ठ recevoir संकल्प 1000 को fois plus que le trésor que सफल j'ai. करने का और Alors, स्वयं को संपन्न pour que करने के chaque लिए pensée élevée soit utile ट्रस्टी et que बनना vous soyez complet, vivez comme un gérant. बहुत ही हल्कापन रहता है ना, जब मेरा नहीं है Il y aura absolument la तो बहुत légèreté, सोचने की जरूरत surtout होती है, parce que ce n'est बाबा pas à का moi. है Je n'ai pas तो besoin de उसमें beaucoup फिर सही penser, ça नहीं चल appartient à पाता है। Baba. Et तो जो ensuite, il y aura les करो pensées ऐसे élevées, करो इस तरह से करो, ये जो श्रेष्ठ संकल्प de है, faire de telle ou telle façon. तो बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी बनना Alors, Baba अर्थात dit, डबल लाइट être un होने gérant का भी, signifie être un ange léger et क्योंकि lumineux जो मेरा है उसका बोझ कम parce que
Lorsque nous pensons à moi, और वो il y a बोझ toujours le हमको fardeau. कष्ट नहीं बनने देता है, राइट? Et quand il y तो a ce कहते हैं fardeau, cela ne lui ट्रस्टी laissera pas la बनना possibilité अर्थात d'être डबल un लाइफ gérant. फरिश्ता बनना Alors, Baba dit, être un gérant, एक स्मित c'est सन être बच्चे का un ange léger et lumineux. और Une हजार pensée élevée de श्रेष्ठ l'enfant संकल्प et l'enfant reçoit le fruit du Père सफल des 1000 pensées élevées. वाह सफल अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है अर्थात एक का 1000 गुना मिल जाता है Alors, cela veut अब dire, बहुत सूक्ष्म l'enfant है reçoit एक का 1000 गुना मिलना 1000 fois pour une. Et c'est un élément très एक subtil, बार cet हुआ है aspect de recevoir हमारी एक 1000 बहन pour मोनी un. थी एक सेंटर Chez पे cette expérience, दोनों जॉब करती थी il y तो avait एक बहन जो है 2 sœurs dans un centre et 2 faisaient अच्छी le travail, la tâche. सैलरी थी Et l'une d'elles, पर वो क्या है बस वो ट्रस्टी होती थी elle कि recevait, मुझे तो बस elle बाबा के लिए recevait करना है बाबा un के gros लिए करना है salaire कन्या कुमारी भी थी बड़ी आयु की थी et elle disait, je fais tout pour Baba, je ne और fais que जो Baba. दूसरी Et बहन c'était थी une jeune sœur, उसको पता une चला कि ये Kumari, et elle a इतना dit, करती है मैं तो नहीं कर सकती हूँ elle a, com- अगर बाबा मुझे दे तो elle, मैं भी इतना कर elle सकती a हूँ compris, je ne जैसे peux वो pas faire सोचती tant. रहती थी थोड़े दिनों में 10 दिन में Elle dirait à उसको Baba, बहुत non, अच्छी c'est trop जॉब pour ऑफर moi. आई तो जॉब ऑफर आई तो काफी Mais ces jours-là, à ce moment-là, elle a तो reçu उसने une थोड़ा offre. टाइम बाबा ने Le जॉब छोड़ salaire दिया était très bas. कि बाबा के लिए करना है Elle a pensé, oui, bien sûr, Baba m'a donné ce और वो travail, je क्या dois है le faire थोड़ा pour थोड़ा Baba. लोभ में आने Et tout लगी doucement, इतना कैसे कर रहे हैं इतना क्यों कर elle रहे हैं est devenue un एक peu तो करती dans थी दूसरी l'avidité. ने Pourquoi बोलना devrions-nous faire ceci, cela? अब तो उसके जीवन Elle में तरह faisait. तरह की बातें Et आने l'autre लगी sœur continuait à faire ce qu'elle avait à faire. अब वो तो ऐसा नहीं रियलाइज कर रही थी कि Celle qui a बाबा changé sa जो है conscience, मैंने elle a eu इतना beaucoup जॉब de ऑफर किया bouleversements dans sa vie तो वो parce qu'elle n'a कहती होगी pas जब एग्जाम comprendre आई qu'elle était un gérant et elle तो pensait, फिर plutôt que de उसके penser जीवन qu'elle में était उतरा gérant, elle संकल्प disait que काफी c'était pour elle. वापस आती नहीं Donc, dans sa vie à तो मन elle, में ये il y सोचा avait कि beaucoup de कितना fluctuations de सूक्ष्म haut et है de bas. Et dans mon cœur, j'ai pensé, मैं c'est ट्रस्टी हूँ tellement subtil et je dois me दूसरा rappeler संकल्प आएगा toujours que je suis सेवा un करने का gérant. Et alors, on a des pensées कोई élevées pour le सेवा करने का service. संकल्प आता है उसका जो रिटर्न Et quand मिलता on है a ces pensées élevées pour le वो एक का service, 1000 गुना on मिलता है reçoit un retour अगर हम qui चाहते est हैं 1000 fois. 1000 गुना रिटर्न मिले Et तो si क्या l'on करना है veut recevoir, डबल लाइफ रहेंगे तो फरिश्ते भी je बनना dois है vivre comme थोड़ा भी un बुढ़ापा gérant et je आने dois से devenir बचना है cet ange léger, जब lumineux, हमें ख्याल तो même आता s'il है y a un peu de "हाँ, lourdeur dans मैं l'esprit, शरीर parce que छोड़ parfois il y दूंगी a à तो l'intérieur इसका cette क्या pensée, होगा si je मैं quitte शरीर छोड़ दूंगी ce corps, तो qu'est-ce qui फिर कौन arrivera à करेगा celui-ci ou मतलब à celle-là? सूक्ष्म में संकल्प चलेंगे Qui pourra और utiliser जब cela सूक्ष्म में संकल्प d'une चलते हैं façon à bon तो escient? भारीपन है तो Alors, on a फरिश्ते भी pensé बनते les हैं pensées subtiles, il y तो a un peu de फरिश्ते बनने के lourdeur. लिए भी Comment pouvons-nous devenir un ange s'il y a ces pensées और डबल subtiles? बल के रहने के Alors, लिए pour devenir un ange, on doit मैं rester léger, ट्रस्टी lumineux. हूँ Et pour être doublement lumineux, तो हमने कभी भी on doit se rappeler ये qu'on est ऐसा un नहीं gérant कहा था et que ça ne कि nous डबल appartient लाइफ pas. फरिश्ते रहेंगे On n'a jamais अब pensé qu'un gérant, c'était un ange léger et lumineux. Maintenant, संकल्प Baba nous a करें fait comprendre. मैं Est-ce que vous avez ट्रस्टी हूँ compris? Alors, quelle est cette ओम pensée? शांति Je suis un gérant. Om Shanti. Alors, c'est la pensée que l'on doit maintenir. ओम शांति avec Om Murli Shanti, Vision c'est le 1929 Murli August Aviak
à partir de 1969. C'est un chit-chat du cœur de l'ange. अव्यक्त वाणी तारीख है 20 सितंबर Ah, c'est le Murli du 20 septembre 1971. Devenez spirituellement aimant. Combien de temps vous faut-il pour devenir Avyak de Vyak? Combien de temps pouvez-vous prendre ces savants, ces âmes sans connaissance? Selon le niveau actuel, combien de temps cela vous prendra-t-il? Combien de temps pensez-vous que vous prendrez, que vous prenez vous-même pour les réaliser? C'est une autre affaire pour ceux qui le deviennent. Quand ceux qui vont devenir ceux-ci sont bons, alors selon votre propre pouvoir, combien de temps vous faut-il pour faire cela? Maintenant, vous pouvez reconnaître votre propre vitesse, n'est-ce pas? Selon l'époque à l'heure actuelle, il faut un certain temps à ceux qui n'ont pas de connaissances pour devenir informés. C'est uniquement parce que ceux qui les fabriquent mettent encore beaucoup de temps à se rendre, à devenir aviact à partir de viact. Lorsque ceux qui font cela aux autres développent cette pratique de se stabiliser dans le niveau aviact à partir du niveau viact en une seconde, ils seront alors capables de faire de même avec les autres tout aussi rapidement. Alors, même si certaines ne sont pas des âmes appartenant à la religion des déités, vous pouvez toujours devenir un instrument pour accorder la bénédiction du mukti à certains et du jivan mukti à d'autres en une seconde. Toutes les âmes doivent recevoir la bénédiction de mukti de votre part, les brahmins. Quelque chose est produit par une machine, tout est créé automatiquement sous la forme, de la manière correcte, en une seconde et apparaît comme un produit fini en une seconde. Où que ce soit, quelle que soit la forme de chaque objet, ça prend un certain temps, mais ça se fait automatiquement. Alors, dans la machinerie spirituelle, est-elle moindre? Grâce à cette machinerie spirituelle, n'êtes-vous pas en mesure d'accorder la bénédiction de Mukti à ceux qui reçoivent ou doivent recevoir le Mukti et le Jivan Mukti à ceux qui doivent le recevoir en une seconde? Êtes-vous les grands donneurs, les grands yogis, les grands gyanis? Vous écrivez même, vous pouvez revendiquer votre droit de naissance en une seconde, ou est-ce que vous écrivez simplement ceci et ou vous le dites pour le plaisir? Vous l'écrivez et vous le dites parce que c'est vrai. Alors, pouvez-vous montrer le chemin vers Mukti et Jivan Mukti ou donner une bénédiction aux âmes en une seconde? Faire en sorte que d'autres âmes réclament une bénédiction ou vous emplir de bénédictions, c'est une autre affaire. Mais vous pouvez accorder des bénédictions, n'est-ce pas? Vous êtes les images qui accordent les bénédictions en une seconde. Pouvez-vous vous rendre aviact et viact en une seconde? Pendant combien de temps? Vous pouvez le devenir pour une période temporaire. Pour cette raison, ceux qui deviennent cela, grâce à vous, ont aussi une ivresse temporaire, un bonheur temporaire, et ils se transforment pour une période temporaire. Tout comme ceux qui créent les autres sont les maîtres créateurs, leur création est également la même. Tout comme vous avez une conversation spirituelle de cœur à cœur
avec le Père pendant une courte période, vous faites l'expérience d'une rencontre, d'être perdu dans son amour, dans ses vertus et dans sa forme. De la même manière, la création chante aussi pendant une courte période de vos louanges. Ils n'ont la connexion avec vous que pour un très peu de temps après vous avoir rencontré. Eux-mêmes vivent une expérience pour une période temporaire et ils chantent vos vertus pendant une courte période. Et parfois, ils parlent même des expériences qu'ils ont vécues. Alors, quelle est la raison? Lors de la réunion, avez-vous établi un programme pour terminer toutes les raisons et les excuses? Si vous résolvez cette situation, alors toutes les autres excuses disparaîtront de telle manière que ce sera comme si elles n'avaient même pas existé. C'est donc la raison principale. Nous écouterons la suite du Murli demain. Om Shanti. खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं व कभी-कभी इस प्राप्त हुए अनुभव को वर्णन करते हैं। तो इसका कारण कौन? मीटिंग में अनेक कारण को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। अगर इस कारण का निवारण कर लो तो और सभी कारण ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि थे ही नहीं। तो मूल कारण यही है। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।